Today student, we will discussing about quantum numbers. Clear? In our previous lecture, we had seen that there are four quantum numbers with the help of which exact location of an electron around the nucleus can be determined. And these four quantum numbers were principal quantum numbers denoted by small n, angular momentum quantum number or azimuthal quantum number denoted by small l. Third is your magnetic quantum number represented by small m, and last one was spin quantum number represented by s. Clear? Now we will discuss one by one briefly. Come to first principal quantum number, पहला quantum number. ठीक है? Principal quantum number, which type of information or what information we can have from this quantum number? Let us see. Principal quantum number. First of all, principal quantum number. This quantum number was introduced by नील बोर. ठीक है, ये क्वांटम नंबर नील बोर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया. क्लियर? नाउ ये क्वांटम नंबर जो है कम टू सेकंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस क्वांटम नंबर, और इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है. ठीक है, तो इट मे हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू, इट मे हैव एनी इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4. इस तरह से इसका इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल है एक्सेप्ट 0. प्लीज पे अटेंशन. एक्सेप्ट 0 मीन्स principal quantum number n cannot have value 0. It cannot be equal to 0. Clear? So it may have any integral value except 0. Let us understand this from this point. See, thus if value of n principal quantum number is 1, it may have value 1, 2, 3, 4. Clear? Depending upon, and its value that depending upon. So see, for thus n equal to, it may have value n equal to 1, 2, 3, 4. That depend upon, or depending upon whether electron is in first, second, third or fourth energy level, in which energy level it is present. Depending upon that, it may have value n equal to 1, 2, 3, 4. For example, see, look at the board here. This is the nucleus. Starting from the nucleus here, this is the first energy level. First energy level. For first energy level, value of principal quantum number n equal to 1. So n equal to 1 principal quantum number, if it has value 1, it represent K cell. Come to next one, this one, n equal to 2. Value of principal quantum number is 2. If it is 2, it represents L cell. Similarly, n equal to 3, M cell, and n equal to 4, N cell. Clear? So this is the value of principal quantum number small n. But it cannot have value 0, because if we take n equal to 0, where electron will go? If we say that electron is present in n equal to 3, then where it is present in M cell. If it is said that electron is present in n equal to 2, for a cell for which, in a cell for which value principal quantum number is 2, means electron is in L cell. If it is said that electron is present whose value of principal quantum number n equal to 1, means it is present in K cell. But if n equal to 0 we take, means electron will reside in the nucleus, which is not possible. So please remember, possible value of principal quantum number is 1, 2, 3, 4 except 0. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, because it would mean that electron will reside inside the nucleus. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, which is not possible. Next is, see, now it determines the principal or major energy level in which electron is present.
Now if I say that electron is present in a cell for which principal quantum number is 3. Please listen once again, I repeat. If I say that electron is present in an energy level for which n, small n, principal quantum number is 3, it means electron is present in M cell. You will not find that electron in L or K, KL or M cell. You will not find. It will present in M cell. क्लियर? तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया अराउंड द न्यूक्लियस. नेक्स्ट वन इज इट डिटरमाइंस द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल. तो किस प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, किस मुख्य एनर्जी लेवल में है, इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये जानकारी मिलता है. नाउ कम टू नेक्स्ट इज फॉर फर्स्ट एनर्जी लेवल. ये फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए आफ्टर न्यूक्लियस दिस इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस वन. इसके लिए, ठीक है, इसके लिए n का वैल्यू हो जाएगा 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1, तो इट रिप्रेजेंट k सेल. Similarly, for second energy level, this one, इसके लिए principal quantum number n का value होगा 2, it will represent L cell, then n equal to 3, M cell, and so on. Clear? Next is this quantum number gives the size and hence energy of orbit. What does it mean? Please try to understand. This energy level means principal quantum number. Principal quantum number also tells the size of atom and energy of the orbit or cell. See, as in class 9th we have studied that each cell, each energy level around the nucleus in which electrons revolve are associated with certain amount of energy. हर एक एनर्जी लेवल जो है सभी का अपना एक एनर्जी होता है एंड दिस एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम इनसाइड आउटवर्ड. न्यूक्लियस से बाहर की तरफ ये एनर्जी इंक्रीज करता है. मीन्स दिस के सेल आउट ऑफ के, एल, एम एंड एन, द एन सेल इज ऑफ हाईएस्ट एनर्जी. ठीक है, एन सेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, देन एम का उससे कम, एल का उससे कम एंड के का सबसे कम. के इज द एनर्जी लेवल विच हैज लीस्ट एनर्जी. मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ हम बढ़ते हैं एनर्जी सेल का एनर्जी लेवल का एनर्जी घटता है. मीन्स हर एक एनर्जी लेवल का अपना एक एनर्जी होता है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम न्यूक्लियस आउटवर्ड. न्यूक्लियस से बाहर की ओर बढ़ने पर उस सेल का एनर्जी बढ़ता है. क्लियर? सो इफ वी अरेंज दैट वेरियस सेल in increasing order of energy, then the cell K with least energy will be first K, then L, M, N. Clear? So now one more thing, that with the increasing value of principal quantum number n, n के वैल्यू में वृद्धि होने से, ठीक है, n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा एटम का साइज भी बढ़ेगा. Reason is that let us suppose we have two atoms A and B. Suppose we have two atoms A and B. Clear? A has 2 cells whereas B has 3 cells. इसमें 3 cells हैं. Obviously, which atom will be bigger in size? This one. See, after nucleus it has 3 cells. 1, 2, and 3. Whereas it has only 2, so it will be C. 1 and 2. Obviously size of atom B will be greater than A because इसके लिए n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज़्यादा है, n इक्वल टू 3 मीन्स इट हैज 3 सेल. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ता है एटम का साइज बढ़ता जाएगा. क्लियर? तो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n. क्लियर?